These are roads that are being built at an almost breakneck speed. Cutting across mountains, widening, blasting. Kilometer by kilometer, the progress of development is measured by the faith that has to be kept. For everyone knows there is a deadline that has to be met. 3000 करीबन पेड़ कटे हैं, जिसमें कुकाड़ भी हैं, ये भी अभी कटने हैं, जो ये पेड़ सामने रखे हुए हैं। इसमें मतलब जो है अभी जो ये स्वयं के हैं, तो इसमें अभी उन लोगों ने मतलब जो है हमें वो दी नहीं है, तो ये रोड पेड़ जो है रुके हुए हैं। ये 3000 मतलब जो है आपका यहाँ से लेके मतलब जो है 5 किलोमीटर ही हो गया आपका, और 49 किलोमीटर मतलब जो है जान की चट्टी तक है कटा हुआ, वहाँ तक इस रोड ने बनना है। Citizens for Green Doon, a Dehradun-based NGO, filed a petition in the National Green Tribunal on the rampant felling of trees. The Green Court has pulled up the government of Uttarakhand, demanding an explanation and putting a stay on the uprooting of trees on the stretch. Till now, from a total stretch of 900 kilometers, 356 kilometers road widening has been taken. And in that 356 kilometers, 42,000 trees, around 42,000 trees have been cut. So, and actually, according to Hill Road Manual, there should be a road of 8.8 meters in the hills. So you don't need a larger road, wider road than that for two trucks to cross. In December 2017, Prime Minister Narendra Modi launched the Char Dham road project in Uttarakhand. The project is aimed at increasing the ease of connectivity between the 4 holy shrines on the Chota Char Dham route. Also known as the 12,000 crore rupees all-weather project, it is a 900-kilometer long network with wide and upgraded roads. हाँ, 15 तारीख शाम से ही काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी और हम लोगों का पूरा बचपन और युवावस्था जो है वो नदी के किनारे गुजरी है। तो एक था हम लोगों के मन में कि यार फ्लैश फ्लड आता है और धीरे धीरे एक झटके के बाद पानी का लेवल कम होने लगता है, लेकिन वो 16th कंटिन्यूस बारिश चलती रही और हमें लग रहा था कि शायद अब पानी कम हो जाएगा, अब पानी कम हो जाएगा। उसी चीज़ को हम मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन 16th नाइट में उस दिन हमारे होटल में कम से कम 120 गेस्ट थे। मैंने डिनर के बाद उनसे मीटिंग की और उनसे कहा कि भाई मुझे लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ खतरे का अंदेशा मुझे हो रहा है। लगभग 7 बजे के करीब हमारे बिल्डिंग का एक पार्ट कोलैप्स हो गया और उसके 2-3 घंटे के बाद एक दूसरा ब्लॉक था, वो भी कोलैप्स हो गया। It was in June 2013 when the state of Uttarakhand was hit by the worst natural disaster of recent times, and the day still haunts the memories. Widespread and heavy rains led to flash floods in all the major river valleys of the state, wiping settlements and destroying lives. 5 years later, the world remembers the catastrophe as Kedarnath floods, where more than 5,000 people were reported to have died and thousands had gone missing. और 13 में वो 17 तारीख को सुबह 7:15 बजे आपदा आई थी और उसमें जो है कि लोग हैं सब बाहर कई आदमी मर गए, पता ही नहीं चला कहाँ का कोई है। कोई लोकल आदमियों को तो पता भी चला पर बाहर के आदमियों का कोई पता नहीं चला कितने आदमी थे। कुछ भाग के गए, कुछ पहाड़ में ऊपर चढ़े तो कुछ वहाँ मरे, कुछ उधर मरे, कुछ बस ऐसे ही मरे। उसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितने आदमी थे। MI 26 वाला, हाँ बड़ा वाला है ये।
इसको बोलते हैं 26 MI, ये वाला है वो ये गोचर रुकते हैं ये। वहाँ उतरे थे तब वहाँ इन लोगों ने बहुत सप्लाई किया ना, हमको तो वो लाए, मैंने हेरिटेज वाला लाया था वहाँ से ऊपर केदारनाथ से, मैंने हिमालय वाले जो है ना उन्होंने हमको बैठाया और गुप्त काशी में छुड़ाया। Over 4,200 villages of Uttarakhand were gravely affected by the devastation. It is believed that the 2013 floods were the worst natural calamity to hit India since the tsunami of 2004. Death and destruction caused by the flash floods was unprecedented across the state of Uttarakhand. In terms of rainfall, the total annual rainfall is more or less constant for the last, let's say 40 or 45 years. But what we have observed is that the incidences of extreme climate event like excessive rainfall in 2013 have increased a lot, and that's why we have higher flash flood, higher cloudburst, higher landslide lake outburst flood, higher glacial lake outburst flood. Known as Devbhoomi, or the land of gods, Uttarakhand is home to the holiest of Hindu shrines and temples. The region is known for its high Himalayan ranges, its glaciers in the north, and as the birthplace of Hindu holy rivers of Ganga and Yamuna. Nestled in the Himalayas, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath Badrinath form the Chota Char Dham circuit, located at a height of 3,000 meters above sea level and visited by millions of pilgrims every year. Hemkund Sahib, a holy shrine for Sikhs located near Badrinath, also attracts considerable number of religious tourists, as do the sacred destinations of Haridwar and Rishikesh by the banks of the Ganga, but in the foothills. साक्षात भगवान रहते हैं यहाँ पर। इतनी कठिन यात्राएं करने के बाद लोग बाग कहाँ से आते हैं, इतनी कठिन यात्रा करते हैं, तो वो भी यही चीज़ देखने आते हैं कि भाई भगवान कहाँ आके बैठे हुए हैं और इनका क्या मान्य है। लेकिन ये सत्य है कि भगवान है, क्योंकि हम लोग भी आते हैं, देखो गाड़ियाँ चला रहे हैं, इतने छोटे रोड हैं और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं है। बारिश होती है या बादल फटने का टाइम होता है, उस टाइम तो हकीकत में डर लगता है मैडम। लेकिन ये है कि बरसातों से पहले तो कोई डर वाली बात नहीं है। पहले तो ट्रेडिशनल बसों में ही यात्रा होती थी, जो इसकी गढ़वाल मोटर एसोसिएशन की जो बसेस होती थी उसमें सीट बुक कराई है, चार धाम यात्रा पे चलिए। पर अब काफ़ी चेंज हो गया है, अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, अब लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है, एसी रूम चाहिए, उस तरीके की फैसिलिटीज़, गर्म पानी की सुविधा, सब चीज़ें चाहते हैं लोग। Decades ago, the pilgrimage taken by devotees was in many parts an arduous journey on foot. Today, the Char Dham Yatra is serviced by all-weather roads and is naturally a hotspot for religious tourism. On each given day through the summer, thousands of vehicles travel the meandering roads of the hill state. The hustle and bustle of tourist cars, buses, SUVs, long queues and roadblocks in the mountains are a common sight during the 6-month Yatra season. One can't escape the buzzing horns, the traffic and the cavalcade of Yatra vehicles on the Char Dham route. Unlike earlier, when it was mainly for the aged, pilgrimage is now a tourist must-do for visitors of all age groups. The commercial alternates like helicopters and luxury tour packages have made religious tourism a profitable enterprise. I remember going in 2009 to Kedarnath, and once we had almost reached Kedarnath, I could see patches of black on the snow, and that
there could be only one source for that: the unburnt exhaust fuel, either from the helicopters or soot that has settled over there from the vehicles comes rising up the valley. Roads that lead up to Hinduism's 4 holy shrines in the Himalayas is often choked by clouds of dust and smoke. Road building and maintenance machines are everywhere because the pilgrimage routes through the mountains need to be kept open. Fumes and boulders mark the construction work that is on in full swing for keeping the Prime Minister's promise of an all-weather road project. The ambitious Char Dham all-weather road is set to be completed by the year 2020. But there have been allegations that the fast-track work on the project is cutting corners to circumvent crucial environmental guidelines. The law demands that if you have a national highway or a state highway 100 kilometers and you want to expand that stretch, then you have to prepare an environmental impact assessment report, get approval for it. What our authorities have done is that they have broken up a 900-kilometer stretch into 10 pieces of 90 kilometers each, and thereby they have circumvented कि हमारे तो छोटे-छोटे projects हैं. Another grave concern for the experts is the lack of proper dumping sites for the debris generated by construction work. The unchecked muck being dumped into river basins can put the flow of rivers in jeopardy during monsoon season, and this could lead to another repeat of 2013. Only 9,000 kilometer road was in the Uttarakhand Himalaya, but after when this state came into existence in last 18 years, some 24 to 25,000 extra road construction. We have constructed extra roads actually, and 1 kilometer road in the hills, if it is constructed, it creates 20,000 to 60,000 cubic meter muck. It has been 5 years since the 2013 floods decimated thousands of lives in the land of gods. The state of Uttarakhand is still reeling under the after effects of devastation. The signs of destruction caused are hard to miss as one retraces the route. In 2014, a year after the disaster, Kedarnath shrine, that had been the worst affected in the mayhem, was reopened to pilgrims. Now, years later, the recollection is still stark, as is the faith of devotees who keep returning over and over again. 2013 में केदार बाबा में था, उपस्थित था, अपने शरीर से ऊपर ही था। वो हमारे पे तो केदार बाबा की कृपा ही थी। 27 यात्री थे मेरे पास, गुजरात के, बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट के, बड़ोदरा के रहने वाले थे। वो उनको फ्रेश ले गया अपने को बचा के। मैं बार-बार आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को मालूम है क्या क्या होता है क्या नहीं होता। उस बार हमारे इसमें के 17 लोग यानी केदारनाथ में थे, और केदारनाथ में पूरी यानी सब एक ही प्रकार से जुड़े हुए थे। और फिर तो आपको डर नहीं लगता अब जब ऐसे आप आए या चार धाम? नहीं, श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है कि डर हो ही नहीं सकता। मेरे साथ भी एक मेरा दोईती है, पोता है, पोता के लेके आई मैंने, चलो इसको भी घुमा लाऊं मैं। अच्छा। हाँ, दोईती भी, बेटी की बेटी भी है, छोटे हैं अभी बच्चों के, तो उनको ले आई। 9 दिन बद्रीनाथ रुके हम, कथा सुनी, फिर होटल में केदारनाथ पहुँचे, केदारनाथ से फिर गंगोत्री, फिर आ गए यमुनोत्री में। इधर यहाँ बहुत गंदगी आ रहा, इधर पहले नहीं था ऐसा, बहुत गंदगी हो गई, बहुत गंदगी। यहाँ देखते नहीं लोग जम गए, नदी किनारे बहुत गंदगी, खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी हो गई। We cannot simply blame the government for that. Government, of course, it plays a major role. Being the job is governance, you know. But on the other hand,
we are also responsible. I have seen people, just drinking water and throwing the bottle out. That is so bad it is. So we have to educate the people on that. Propelled by their quest for spirituality and the easier commute, more and more number of tourists are visiting the sacred sites with each passing year. Since Yatra gates opened, over 20 lakh tourists have visited the holy destinations of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath, Badrinath and Hemkund Sahib in April-May 2018. Tourism, other than hydropower, is one of the major contributing factors of revenue for the state of Uttarakhand and is aggressively being promoted and advertised by the government. Since Uttarakhand was carved out as a separate state in the year 2000, the local economy in the region has relied heavily on income generated during the Char Dham Yatra season. तीर्थयात्री आएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में जाएगा तो उनको भी उससे फ़ायदा होता है। तो बेसिकली वो एक चेन है, होटलियर से लेकर के और एक सब्जी वाले तक की पूरी चेन है कि हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे, हम सब्जी खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, तो वो एक इकोनॉमी को चलाने का एक सिस्टम है कि भाई सब लोगों का एक पहिया है वो कि जो घूम रहा है। Hotels, restaurants and roads form the backbone of economy, which in turn is driven by money generated from tourism. A large number of constructions have mushroomed in the region, but experts warn that this rampant and unchecked construction has its own perils for the fragile mountains of the Himalayas. Well, if you interfere any slope, maybe for widening of road, for construction of tunnels, hydropower, bridges, dams, etc. I think all these factors lead to destabilization of slope or to landslides. पहले वाला हिसाब तो कुछ और था। पहले घास फूस के मकान थे वहाँ, पहले पत्थर से बनते थे। पहले का तो लोग वो ईटा वोटा पत्थर पुतरने जानते, अब सारे उससे बनने लग गए हैं। As millions of devotees visit this state to bow before their gods, the fragile terrain of Uttarakhand reels from having to carry the burden. Ironically, the massive reconstruction that followed the 2013 floods and the substantial aid that had poured in to rebuild infrastructure ensured the further concretization of the environment. There is no convincing study yet which can give a very fundamental thing that what would be the carrying capacity of these terrains. कुछ साल पहले ये ऑब्जर्व हुआ कि गौमुख is under threat, the source of the mouth of the glacier from where Bhagirathi emerges. At that time, some serious officials put their heads together and said no more than 150 people visiting Gaumukh in a day and only 20 ponies in a day. If that could be done, so can people be limited today and dispersed all over the state. The Himalayan state has a long history of natural calamities. Landslides, forest fires, cloudbursts and flash floods are a common phenomenon in the region. The lush mountains and glaciers of the region have been reeling under the effects of climate change. अब जो पहले जो है माउंटेन में रेनफॉल नहीं होती थी, नाउ द रेनफॉल एरिया इज इंक्रीज। आपका रेनफॉल एरिया जो है आपको आज जो है 4500 तक रेन मिलती है, जबकि पहले आज से 20 साल 30 से 50 साल पहले जो वहाँ डायरेक्ट स्नोफॉल होती थी। स्नो लाइन पीछे जा रही है। आपका जो है समर पीरियड जो है एक्सटेंड कर रहा है, विंटर श्रिंक कर रहा है। The abode of gods in the lap of Himalayas make for a vulnerable and fragile ecosystem. The continuous disregard for the environment is believed
to be an invitation for more calamities in the future. Some harsh lessons were learnt from the disaster of 2013, but were they enough? जैसे एक आदमी की उम्र होती है ना और भाग्य होता है, वैसे किसी जगह की भी उम्र होती है और भाग्य होता है. For the devout, natural calamities are divine retribution. वहाँ से जब पानी उठा तो इतना ऊंचा उठा वो कि बहुत दूर, और ऐसा रूप दिखाई दे जैसे साक्षात भोले शंकर होते हैं. For the environmentalist, this is because of man's interference with nature. Aren't we disturbing the wildlife? Aren't we disturbing the ecosystem of those valleys and those places? Why are we want to earn from Himalayas? Himalayas is not our business. For the economy of Uttarakhand, religious tourism is the golden goose. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.